हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अनदर स्टोरी from the English textbook of class 10, Tea from Assam. Okay, and this is a very interesting story. You'll get a lot of knowledge about Assam with reference to tea. Okay, so let's start. Tea from Assam in the English syllabus for class 10 MBOSE, and I'm going to make here a page by page explanation. In fact, paragraph by paragraph explanation. So it is a full explanation in that sense. ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. So here the full summary. So let's have an introduction. Okay, so as you open your book, and I would prefer all of you to open your books. Okay, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है किताबें खोल के रखें, so that you can relate my explanation to your book, link my explanation with your books. Okay, so there are two friends, Pranjal and Rajveer. Okay, and they are classmates at a school in Delhi. So Pranjal and Rajveer, they are classmates at a school where in Delhi. Now what is Pranjal's background? Pranjal is from Assam. Okay, as the name suggests. Okay, as the name suggests, Pranjal. Okay, so he is from Assam, and his father, Pranjal's father, is a manager of a tea garden in Upper Assam. तो Pranjal जो है, Pranjal is from Assam, and his father is a manager of a tea garden. Okay, where in Upper Assam. So invitation. What is the invitation? Invitation is that Pranjal invites Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि समर वेकेशन शुरू होगा, चलो हम लोग एक साथ. Both their summer vacation started together because they study, both of them study in Delhi, right? So both their summer vacation started together. So Pranjal invited Rajveer that in this summer vacation, I'm going home. I invite you also to come with me to Assam. Okay, to my home. So during the summer vacation, both Pranjal and Rajveer, they are now traveling to Assam. Okay, now this scene takes place at a railway station. Okay, at a train station. So if you open the book, you see that they are traveling in a train. So the scene takes place at a train station. Okay, now in your book you see a tea vendor offers tea. Now from here only the story begins. Actually it is though not a story in that sense, but anyways, because the story is about tea, so the starting is a tea. Okay, so a tea vendor, आपको पता है चाय वाला जो होता है, ट्रेन में चाय बेचते हैं, hawker, tea vendor. So a tea vendor offers tea to two friends and they decide to buy 2 cups of tea. तो एक टी सेलर आता है ट्रेन के अंदर और वो वो चाय बेच रहा होता है, चाय. ओके, सो द टू फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर, दे डिसाइड टू बाई 2 cups ऑफ टी फॉर देमसेल्व्स. ओके, दोनों जो हैं 2 कप चाय टी वेंडर से खरीद लेते हैं. Now most people in the train compartment are also drinking tea. If you have traveled in train, you see I am a tea lover. That is why I love this story very much. क्योंकि मैं खुद एक चाय लवर हूँ, इसलिए मुझे ये स्टोरी बहुत इसलिए पसंद है क्योंकि चाय के बारे में है. तो अगर आप ट्रेन में जाए तो आप देखिए सबसे कॉमन जो चीज़ जो बिकता है ट्रेन के अंदर, द कॉमन थिंग दैट इज सोल्ड इन द ट्रेन, इनसाइड द ट्रेन इज टी. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल ड्रिंक टी in the train. Okay, so most people, they also saw that most people in the train compartment were also drinking tea. अब राजवीर जो है वो मेंशन, देखिए प्रांजल is from Assam and Rajveer is not from Assam. Okay, though it is not mentioned in the book from where Rajveer is, but Rajveer is not from Assam. But Rajveer has done a lot of studies regarding tea. तो राजवीर ने बहुत सारा स्टडीज किया है टी के ऊपर. तो राजवीर जो है वो प्रांजल को ये इंफॉर्मेशन देता है. राजवीर मेंशंस, इन्फॉर्म्स प्रांजल that 80 crore cups of tea are consumed, are drank, consume मतलब यहाँ पे drank daily worldwide. तो पूरे वर्ल्ड में जो है 80 crore cups of tea are drank by people in the whole world. So this information please remember. Okay, 80 crore cups of tea are drank daily in the whole world. And who said this? Rajveer gave this information to Pranjal. ठीक है. Pranjal is from Assam, but look at the irony. Pranjal is from Assam, but he does not have any background knowledge of tea. Okay, but Rajveer has done his homework. Okay, so Pranjal is surprised to hear this. तो प्रांजल जो खुद आसाम से है वो खुद थोड़ा सरप्राइज हो जाता है. अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं पता था. I did not know this fact. So he is surprised to hear this fact and says that yes, tea is a very popular drink. So Pranjal only knows that tea is a very popular drink. But he did not know that 80 crore cups of tea are consumed, are drank every day in the whole world. Okay.
देन फाइनली द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, तो ट्रेन जो है वो छोड़ देता है, द ट्रेन स्टार्ट्स, इट लीव्स द स्टेशन. अब प्रांजल he opens, he takes out a book from his bag and that book is a detective book, okay, and Pranjal starts reading his detective book. Now Rajveer also liked detective stories, but he was more interested in the outside view. So as the train left the station, Pranjal started reading. Pranjal got involved with his detective book. Pranjal जो है वो busy हो गया, अपने detective book निकाल के वो पढ़ रहा था. But Rajveer also liked detective stories, but he was more interested to see the outside view. ट्रेन के बाहर का जो व्यूज है वो एंजॉय कर रहा था. क्या क्या व्यूज है, व्हाट आर द व्यूज, ओके, सीनरी, वी विल लर्न हियर. अब राजवीर हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर. देखिए, इफ यू टॉक ऑफ द होल नॉर्थ ईस्ट इज एक्चुअली नोन फॉर इज फ्लोरा एंड फौना. मतलब इतने यहाँ पे ट्रीज, इतना ग्रीनरी यहाँ पे है, सो मच ग्रीनरी, ट्रीज एक्चुअली, that outside people when they come here they feel mesmerized. वो यहाँ पे आते हैं, उनको अमेजिंग लगता है, क्योंकि बाहर जो है पेड़ पौधे बहुत कम हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, देयर आर मोर बिल्डिंग्स एंड लेस ट्रीज. So Rajveer had never seen, because he is from the other part of India, so he had never seen such greenery before. So वो बाहर देख रहा था और enjoy कर रहा था, and Pranjal was reading a detective book. So here you see, as Rajveer saw outside the moving train, he saw green paddy fields, okay. तो जैसे क्योंकि राजवीर जो है वो बाहर की सीनरी में इंटरेस्टेड ज़्यादा था, okay, because he is from other part of India, so he had not seen such greenery, right. So he was interested to see outside. So what he saw outside? He saw green paddy fields. उसने खेत देखा. He saw tea bushes. They had already reached possibly the part of Assam. That is why they could find tea bushes. Okay, tea gardens. Then thick forests on the hills. Okay, घना जंगल देखा पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, on top of the hills or on the hills. He saw thick forests and he also saw workers working in tea gardens. तो उसने देखा कि कई सारे workers जो है वो tea garden में काम कर रहे हैं. And he got very interested to see all these things because he had never seen these things, okay. Then some tall trees stood among the small tea plants giving shade. तो आपने देखा होगा, if you had seen tea garden, then you would have seen that, see, these are the bushes, tea bushes, and in the middle there will be a tree, so that the tea bushes can get a shade, okay, ताकि tea bushes को छाँव मिले, shade मिले, right. There will be some 3-4 bushes, and in the middle there will be a big tree, okay, or a medium sized tree to give shade, okay. तो उसने देखा shade, तो वो बहुत interested हो गई ये सब देख के. Then in the distance there was a big factory with smoke coming out of its chimneys. तो distance में देखा उसने एक big factory, and from the factory smoke was coming out of its chimneys. factory पे काम चल रहा है, okay. Then Rajveer saw tea bushes everywhere. तो जहाँ उसका नज़र पड़ा from the window of the train, wherever he saw outside he found only tea gardens and tea bushes. And covering the land so much that it looked like sea. तो ये बहुत important है कि he compared the tea bushes with sea. So he said that it's a sea of tea bushes. एक पॉइंट पे उसको ये फील हुआ कि it's like a समंदर, sea of tea bushes. चाय के bushes से, चाय के plant से एकदम भरा हुआ, it looked like sea. Okay, so Rajveer got very excited after seeing the tea gardens. जितने भी tea gardens उसने देखा राजवीर ने, he got very very excited. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. However, you see, Pranjal was not as excited as Rajveer. तो प्रांजल इतने excited नहीं था. Why? Because he was from Assam and every day he saw, okay, and he saw tea gardens and such sceneries every day. तो हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, not only Assam but we नॉर्थ ईस्ट people, okay, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, Assam, we belong to the northeastern part of this country, so we see these things every day. Stream, झरना हम लोग देखते हैं, we see all these things every day, so we will not get very much interested. So in the similar manner, Pranjal was not very much interested. He was from Assam, so he used to see all these things every day: tea gardens, sceneries, greeneries, hills, every day, forests, okay. Now Pranjal tells Rajveer that Assam is a tea country. Actually Assam जो है वो चाय के लिए ही famous है. It is famous for tea plantations, okay, and it has the largest concentration of plantations in the world. Largest concentration मतलब आप अगर आसाम में कभी गए हैं, if you have been to Assam, you will see tea gardens everywhere. हर जगह आपको tea gardens मिलेगा. That is why he says, Pranjal tells Rajveer that
Assam is the largest concentration of tea plantations in the world. Okay, now Rajveer, before coming to Assam actually with Pranjal, he had read a lot about tea before visiting Assam. तो राजवीर ने बहुत सारा होमवर्क ऑलरेडी वो कर चुका था, बहुत सारे होमवर्क्स उसने किए थे, उसने बहुत सारा स्टडी किया था चाय के ऊपर. ओके, सो दैट एटलीस्ट ही कैन गो एंड बोस्ट, वो थोड़ा जाके जो शो ऑफ कर पाएगा, ऐसा कुछ ऐसा ही टाइप का. ओके, सो कैन ही कैन गो एंड शो ऑफ अ लिटिल. सो ही ऑलरेडी हैड डन हिज होमवर्क ऑन टी, सो ही हैड रेड एवरीथिंग अबाउट टी. ओके, चाय के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ लिया था ऑलरेडी. So there are, now he goes on telling that there are many stories about how tea was discovered. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि चाय कैसे डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम चाय किसने पिया और ये कैसे डिस्कवर हुआ. ओके, सो वन सच स्टोरी इज अबाउट अ चाइनीज एम्परर हु ड्रैंक बॉइल्ड वाटर. अब चाइनीज एक कहानी है जिसमें एक चाइनीज एम्परर है जो कि गर्म पानी पीता था, हु यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. तो वन डे व्हाट हैपेंड, सम लीव्स फेल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर. अब एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्ते उसके गर्म पानी में गिर गया और जैसे ही द एम्परर ड्रैंक, इट टेस्टेड वेरी गुड. और वो पत्ते किसके पत्ते थे, दोज लीव्स वेयर टी लीव्स एक्चुअली. ओके, सो फ्रॉम देयर दिस चाइनीज एम्परर फेल्ट, ओके दिस लीफ इज वेरी टेस्टी एंड इफ इट फॉल्स इनटू बॉइल्ड वाटर and if I drank that boiled water it became tastier, वो और ज़्यादा tasty हो गया. तो from there only tea got discovered. Okay, then Rajveer told another story. See, this story is being told by Rajveer. Okay, because Rajveer had done a lot of homework. मैंने जैसे आपको बताया, he had read a lot of things about tea before coming to Assam. So Rajveer told another story about an Indian monk named Bodhi Dharma. तो ये पहला स्टोरी था और ये दूसरा स्टोरी. This is the second story that Rajveer said about how tea was discovered. Now this is about an Indian monk, एक इंडियन साधु था जिसका नाम था बोधि धर्मा. Now बोधि धर्मा cut his eyelids because he felt sleepy while meditating. तो बोधि धर्मा one day he was meditating, वो मेडिटेट कर रहा था और मेडिटेट करते करते वो सो गया था. तो उसको बहुत बुरा लगा कि while meditating, while taking the name of God, I felt sleepy, so he cut his eyelids. ओके, और ऐसा कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स जो है ग्रू फ्रॉम हिज आईलिड्स, उसके आंखों से 10, यू रिमेंबर द नंबर. ओके, आई एम गोइंग एग्जैक्टली बाय द बुक. ओके, सो 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स उसके आईलिड से ग्रो हुआ. एंड बॉइलिंग देयर लीव्स हेल्प रिमूव स्लीप. और जैसे ही इन पत्तों को बॉयल किया गया गर्म पानी से, व्हेन दिस लीव्स वेर बॉइल्ड विथ हॉट वाटर and those were drank, it helped to remove sleep. तो इसलिए हम लोग जब चाय पीते हैं तो हम लोगों को नींद नहीं आता है फिर. when you drink tea, when you feel sleepy, and if you drink tea then you will not feel sleepy, आपको नींद नहीं आएगा उस वक्त. ठीक है, then you see tea has been consumed first in China in 2700 BC. a very important information again I am giving you. so tea को सबसे पहले कहाँ में पिया गया था, it was consumed, it was drank in where, in which place, in China. In which year? 2700 BC. पहली बार टी को कंज्यूम किया गया था चाइना में 2700 BC में. अब ये चाय वर्ड, चीनी वर्ड कहाँ से आया? वर्ड्स लाइक चाय, वर्ड्स लाइक चीनी, दीज आर नॉट इंडियन वर्ड्स, दीज केम फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज. तो हम जब बोलते हैं कि चलो चाय गर्म कर दो, चाय में थोड़ा सा चीनी डाल दो, एक्चुअली दीज आर नॉट इंडियन वर्ड्स. चीनी इज नॉट एन इंडियन वर्ड, चाय इज नॉट एन इंडियन वर्ड, इट इज अ चाइनीज वर्ड and it came from Chinese language. Okay, now so tea reached Europe in the 16th century and was considered a medicine. ठीक है, तो टी जो है चाइना से कहाँ पहुँचा? From China it reached Europe. When? In the 16th century. And tea was considered as a medicine. Nowadays we drink tea for every purpose, but tea at that time, especially when it came from China to Europe in the 16th century, it was used as a medicine. It was considered a medicine. Anyway, so after having, after Rajveer gave all the informations, the train arrived at Mariani Junction, which is in Assam only. Okay, the train arrived at Mariani Junction. This is in Assam only. Okay, this is in Assam. So the boys took their luggage and moved through the crowded platform. So the boys came out of the train, they had reached their destination, they took their luggage and they moved out of the
क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म से वो लोग बाहर निकल गए, प्लेटफॉर्म बहुत ही क्राउडेड था, वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए, दे केम आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म. सो प्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम एट द स्टेशन, तो प्रांजोल के पेरेंट्स आए हुए थे, दे वे वेटिंग फॉर द टू बॉयज प्रांजोल एंड राजवीर, एंड देन इन अ कार दे soon started their journey towards ढेकियाबाड़ी टी गार्डन where Pranjol's father Mr. Barua, तो प्रांजोल का पिताजी का नाम है मिस्टर बरुआ, worked as a manager. Okay, I hope you understood this thing. Okay, their journey is where, their destination is where they have to go to ढेकियाबाड़ी टी गार्डन, and ढेकियाबाड़ी टी गार्डन is the place where Pranjol's father Mr. Barua, he worked as a manager. I already told you in the beginning that Pranjol's father was a manager in a tea garden. Which tea garden? ढेकियाबाड़ी tea garden. Okay, this is in Assam only. तो after 1 hour their car left the main road and took a turn. ठीक है, तो 1 घंटे की जर्नी के बाद उनकी कार ने लेफ्ट टर्न लिया, they took the left, the car left the main road. तो मेन रोड जो है ले लिया, लेफ्ट टर्न नहीं, आई एम सॉरी, दे लेफ्ट द मेन रोड, मेन रोड जो है वो छोड़ के एक टर्न लिया टूवर्ड्स दी ढेकियाबाड़ी टी गार्डन. ठीक है, 1 घंटे बाद. नाउ दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज था, एंड दे एंटर्ड द ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट. तो फाइनली वो आए कहाँ पे, एक कैटल ब्रिज क्रॉस करके वो आए एक ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में, टी एस्टेट टी गार्डन. ओके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड देयर वर लार्ज टी बुशेस ऑल कट टू द सेम हाइट. तो दोनों तरफ ये जो टी एस्टेट था, इस टी एस्टेट के दोनों तरफ, नाउ यू कैन इमेजिन दिस इज द रोड, दिस इज द रोड टू ढेकियाबाड़ी, से दिस इज द ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट. ओके, दिस इज द रोड, एंड ऑन बोथ साइड्स देयर वेर टी बुशेस, दोनों तरफ जो है टी बुशेस था, और बीच में से उनका गाड़ी जा रहा था. देयर कार वाज ट्रैवलिंग इन द मिडल, एंड ऑन बोथ साइड्स देयर वेर टी बुशेस, एंड ऑल द टी बुशेस वेर कट टू द सेम हाइट. हर टी बुश जो है वो एक ही साइज में कट किया गया था. Okay, I hope you understood. तो many tea pluckers, now there were many workers working there. Okay, so tea pluckers हम लोग बोलते हैं जो चाय के पत्ते उठाते हैं. Okay, जो चाय के पत्ते उठाते हैं, tea pluckers, we call them tea pluckers. So many tea pluckers who were carrying bamboo baskets. आपने देखा होगा टी गार्डन में जो है पीछे जो है वो लोग बास्केट रखते हैं, that is made of bamboo, and it is there only that after plucking the tea leaves they will put there only इन दैट बास्केट बिहाइंड. ओके, और फोरहेड के ऊपर जो है, सर के ऊपर वो लोग एक पट्टी लगाते हैं सो दैट इट कैन कैरी द वेट ऑफ द बैम्बू बास्केट्स, राइट. एंड दे वेर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, तो वो लोग प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे, एंड दे वेर पिकिंग फ्रेश टी लीव्स. तो जो फ्रेश टी लीव्स है, ओके, दे वेर पिकिंग, दिस टी प्लकर्स वेर पिकिंग द फ्रेश टी लीव्स एंड पुटिंग इन द बैम्बू बास्केट बिहाइंड. ओके, Pranjol's father now slowed down his vehicle to let a tractor pass. तो आगे से one tractor was coming from the front side, तो Pranjol's father slowed down the car so that the tractor can pass. ठीक है, ट्रैक्टर के पास होने के लिए जो है प्रांजोल के पिताजी ने अपना गाड़ी स्लो कर दिया. The tractor was pulling a trailer full of tea leaves. अब इस ट्रैक्टर में क्या था? This tractor consisted of दिस ट्रैक्टर वॉज फुल ऑफ टी लीव्स. तो इस ट्रैक्टर में भर के चाय की पत्तियां थी. ठीक है, राजवीर आस्क्ड इफ दिस वाज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड. तो राजवीर ने प्रांजोल के पिताजी से पूछा, राजवीर आस्क्ड प्रांजोल्स फादर दैट अंकल इज इट द सेकेंड फ्लश और दिस स्प्राउटिंग पीरियड. स्प्राउटिंग मतलब जब नए पत्ते आते हैं, जब टी के प्लांट में नए पत्ते आते हैं, व्हेन न्यू लीव्स कम, व्हेन न्यू लीव्स स्प्राउट. ओके, तो Rajveer asked this question, and Rajveer has already studied everything about tea, so Rajveer has this knowledge about second flush, sprouting period, because Rajveer also mentioned that this sprouting season lasts from May to July and it produces the best tea. तो ये जो sprouting season है ये मई से लेके जुलाई तक रहता है, and the leaves are of very good quality leaves, and that is why it produces the best tea. आसाम की टी जो है वो दुनिया के हर कोने में जाता है. The tea of Assam reaches every corner of the world. Tea of Assam is famous actually. Okay, so Rajveer gave this information to his father also. Actually, his father knew everything, but Rajveer, because he had studied about tea
That is why he could tell all these things. Okay, so please remember that the sprouting period lasts from May to July and it produces the best tea. फिर Pranjal's father was surprised, obviously, because Rajveer did not belong from Assam. Right? That is why Pranjal's father, Mr. Barua, was very much surprised. And he told Rajveer that, Rajveer, you have done your homework already, huh? That means you have gathered information, so many information about tea plantation and production in advance. तुमने एडवांस में टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है. Wow, very good, fantastic. Okay, Pranjal's father was impressed actually, surprised and impressed both. वो सरप्राइज भी हुए और इम्प्रेस्ड भी हुए. ठीक है. अब राजवी ने कहा, yes uncle, I have studied a lot of things about the tea plantations and tea, and in fact the history of tea, how tea was discovered and all these things. Okay, he said, and he wanted to learn more during his stay in Assam. So Rajveer also told Mr. Barua, Pranjal's father, that uncle, I have learned many things about tea, but not everything. So while I stay in Assam, I would like to learn more about tea. तो जब तक मैं आसाम में हूँ, मैं आपसे जो है फ्रॉम यू आई वांट टू लर्न मोर अबाउट टी. जब तक मैं आसाम में हूँ. ओके, एंड हियर इज वेयर द स्टोरी एंड्स. सो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट टी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से चाय एंड चीनी, okay, you must think that these are not Indian words, these are Chinese words. Okay, chai and chini. Sometimes China is considered as Chini people also. Okay, so chai and chini are from our Chinese language actually. Okay, so you have also learned so many things about tea, and I have provided you page by page, paragraph by paragraph information. You just need to read the book, a little bit, and watch my video. You will get the entire knowledge. Especially it will help you in your MCQs, okay, and short questions and answers. So with this, I would like to end the video, and before ending the video, let me request all of you that please subscribe to my channel, please like my video, because when you like, I get a lot of motivation, and please share my videos. Okay, you can share on your WhatsApp status, you can share the video links personally with your friends so that they can subscribe and get the maximum benefit out of it. I am there on Instagram also. You can scan the QR code, or the link is given in the description box. You can click on the link on the description box, and you can follow me on Instagram. And this is my website. Time to time I give a lot of notes on my website, so that also you can see. So that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. With love from Omni Gyan, and all the best to all of you. Thank you so much.